ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति चत्वाराभ्यास चतुर्थाभ्यास पृष्ठक्रमाङ्क 8। क संज्ञाशब्दानि नास्ति न सन्ति अद्यतनः किमपि नास्ति संज्ञाशब्दानि। सन्ध्याजी कृपया पठतु ख इति इत्याह। तू करना, अस होना, चुर चुराना, चिंतन करना, सोचना, कहना, भक्ष खाना, ग इथम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, अपि भी, एव ही, च और, किंतु किंतु, परंतु परंतु। अस्तु धन्यवादः। एकनिमिषः धन्यवादः। कृ कर्ण कृ अस् कृ धातु अस् धातु कर्ण अस् होना तो अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्थ अस्मि स्वः स्मः they have given below and karoti कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः। तो अहं करोमि सः करोति अथवा सा करोति अथवा भवान् करोति अथवा भवती करोति सर्वे करोति। त्वं करोषि यूयं कुरुथा। वैसे भवान् अस्ति भवती अस्ति सा अस्ति सः अस्ति तत् अस्ति सर्वे अस्ति ही। अस्तु पुनः ग शब्दानि अव्ययशब्दानि इत्थं तथा यथा कथम अपि एव च किन्तु परन्तु सर्वे सुलभाः सन्ति। सुंदर जी कृपया पठतु घ विशेषण। एकः द्वौ त्रयः तीन चत्वारः चार पञ्च पाँच षट् छः छः सप्त सात अष्ट आठ नव नौ दश दश। सर्वे बहु सुलभाः सन्ति। एक द्वौ त्रय चत्वार पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। सम्यक्। व्याकरण अहं पठामि। कृ धातु अस् धातु उभयोः वयम् अपश्यामः अधुना। करोति अस्ति करोति इत्यादि अस्ति इत्यादि। द्वितीय प्रथमः कृ धातु अस्ति द्वितीय व्याकरण भागः अस्ति अस् धातु। तृतीय चुरादि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। चुर चोरयति चिंतयति। तो गण दे हैव स्टार्टेड गण धातु गण ग्रुप्स ऑफ धातुस। दश गणाः सन्ति देयर आर 10 ग्रुप्स ऑफ धातुस। प्रथमः भ्वादय भ्वादिगणः भ्वादिगण इति पुस्तके अन्तिमभागः अस्ति। गणाः किम् अस्ति पुस्तके धातुरूपसंग्रह पृष्ठक्रमाङ्क ये सतः द्विचत्वारः 142 10 ganas are given. We can see later, no need to see now. परन्तु आवश्यकता नास्ति अधुना पश्यामः। परन्तु भ्वादिगणः अस्ति भूधातु इत्यादि। चुरादिगणः अस्ति चुर धातु इत्यादि। चुर चिन् कत् चुर धातु चुरति नास्ति
पठ धातु पठति अस्ति, परन्तु चुर् धातु चुरति नास्ति, चोरयति। धातुगणः समानः न स्तः, चुरादिगणः वादिगणः, भेदः अस्ति, डिफरेन्स् इस् देर्। अस्तु, चुर् चोरयति, चिन् चिन्तयति, कथ् कथयति, भक्ष् भक्षयति। चत्वारः प्रत्याहार बनाने के लिए इन 14 माहेश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर लें। अस्तु, माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। माहेश्वर सूत्राणि आर लाइक दिस। ओके, सो दे हैव सेड अ इ उ इण। अ इ उ इण mean these four, when we start with a and it ends in na. So sometimes they will say arne ityadi in the sutras, Sandhi Sutra, in Ashtadhyayi, in all the sutras they will say arne ityadi. Over the weekend I will share a PDF of the Maheshwara Sutrani so that we can see it again before next week. But these 14 Maheshwara Sutrani, rul, r, ik, a, o, in, a, ouch, all these Sutrani will help us understand which Gana forms which Dhatu is in which Gana, which Sutra will govern which Dhatu, which Pratyaya will be useful in which Dhatu. All these are useful through the Maheshwara Sutrani. One more thing, how this Maheshwara Sutrani works, I will just explain quickly, and then the PDF you will see, and then Monday we can see again. If there is ta, tha, ja, jha, na, for example, or let's say something simple, a, I, u, u, let's say these 6. In Maheshwara Sutrani they want to say, they will say a, u. They will only say the first and last, and we have to assume everything in the middle is part of that. But This is, here, so I will share the PDF and then it will become very clear. A, I, U, In works for a set of dhatus, not just A, I, U, In swaras, even more. But they have only given these here because they want to go from A to E to U to Na. Yeah. But here O, A and all are missing. So Yes. assume they are there? Yes, so in the PDF that is shared, it will all be very clear. But your thought process is correct. So when the first and last are given, whatever is in the middle is also taken in Vyakarana. This is a Vyakarana rule, a very basic rule, not very useful later on, but it is a rule nonetheless. Prathamaha Antaha, Prathamaha Antimaha, iti dve sware mukhya staha, iti dve sware sarve swarani santi, iti dve sware. Prathamaha Antimaha, from the first and the last. I will share PDF, then it will become very clear. Because here, for example, Hal also. Ha. So La you would expect to come before her. Yes. No. So you in the second one you are saying Rul Ruk? No, the 14th one. 14. Hal refers to a certain group. Yeah. So it's not from her to No, not necessarily. So in Maheshwara Sutrani, and it will not be in that order. No. It will not be in Yaralava order. Yeah. It is a different order for Maheshwara Sutrani. Okay, see the PDF. Yes. Okay. Yeah, so not just Hal, everything there is a Jabagada Dash. What order is this? Random. So this follows a different order. Sure. इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है. पहले स्वर फिर अंत, अच्छा दिया है यहाँ पे. पहले स्वर फिर अंतस्थ फिर क्रमशः वर्ग के पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम अक्षर और अंत में ऊष्म है. So this is one order that they have followed in all 14 Maheshwara Sutrani, that they have not taken all of these things in each sutra, whatever is relevant only. Don't worry. Now it sounds, because this is the first time we are getting the Maheshwara Sutrani, it sounds different. But it's not something to worry about. It is quite simple, really. Once we see the PDF, it will be very simple. Astu. Panchama. प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन. इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम ये है कि मस्ती सूत्रों के अंतिम अक्षर. अच्छा, all this we will see on Monday. They have given this here. For example,
सूत्रों के अंतिम अक्षर इन एक आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं, अंतिम अक्ष प्रत्याहार बनाने के साधन है. So the sadhana, antima akshara, we will have to see this again on Monday, no problem. But the first and the last is what we have to remember. जैसे जो ख, I will just read quickly this Hindi, we can see it again on Monday. जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ ढूंढना चाहिए. अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढिए. बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार के में माने जाएंगे. प्रथम और अंतिम देव गिवन, बीच में जो भी है उसमें ही आएगा. जैसे अल प्रत्याहार अ से लेकर अंत तक, प्रारंभ में अ है, अंतिम सूत्र में इल है. अल मीन्स अ टू इल, वॉट एवर इज बिटवीन अ एंड इल यू टेक दैट. अल अल पूरी वर्णमाला, बिकॉज द लास्ट वन इज इल, राइट. We assume the last is r and all that is the end. So al means all of it. Whole alphabet is al. Ach, for example, ach is a se I ouch ke ich tak. So ant a se ich will be ach. So you include amaha also? No, visarga will not be included in this. No. Anuswara visarga will not come. Im may come, but anuswara as such will not. अर्थात सारे स्वर. हल, हाँ हल यहाँ पे दिए हैं. ह से हल के इल तक, अर्थात सारे व्यंजन, बिकॉज ह इज टेकन एज द फर्स्ट व्यंजन. फ्रॉम ह ऑल द व्यंजन until al. In Maheshwara Sutrani, in this order, in hal we are taking ha as first. So all the vyanjanas are taken inside ha. They complicate, but it is, they have their own system. Once you know their system, then everything else is. You can imagine between this and Nyaya and what we know. Yeah, of course. Each one is following a different. Yes. For example, you see ak, a, I, u, r. Because ka is the first vyanjana there. So until ka, but ka is not included. Only a, I, u. And ik is I, u, r. Yan, ya, va, ra, la. Shar, sha, sa. So these are all just ways to remember what is there. This is the Vyakarana system. The system is taken where first and last aksharas are taken. So for example, if I say kad, ka, ka, ja, ja, nga, ha, da, that da, till that third, tritiya akshara, till that ta, everything is taken. But it includes the third. Yes, in that system, but not necessarily, because here, for example, in hal you have to take il. So if it is vyanjana, you have to take it. If swara and vyanjana are separate, then you won't take it. You take only swaras or only vyanjanas. It will come. It will take a little time, but once that system is understood, it is easy. Okay. हाँ, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति चेत् वयं पश्यामः अग्रे. नियम नवम, 9th नियम. हाँ, अवंतिकाजी कृपया पठतु. नवम 9, नियम 9, पृष्ठ क्रमांक 8. च और हाँ, का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से हाँ, एक शब्द के बाद किया जाता है. हाँ, जैसे फल और फूल. हाँ, फलम पुष्पम च. हाँ, फलम च पुष्पम हाँ, अशुद्ध. हाँ, सम्यक. फलम च पुष्पम इज अशुद्ध. फलम पुष्पम च, हिंदी में फल और पुष्प, लेकिन संस्कृत वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. संस्कृत भाषायां च अंतिम इति भागे अस्ति च इति शब्द. अस्तु, अभ्यासः. संध्या जी कृपया हिंदी अथवा इंग्लिश ट्रांसलेट करोतु. हाँ, एकः मनुष्यः अस्ति. एक मनुष्य है. हाँ, और फिर अग्रे. दो बालकों था. हाँ, 2 बालक है. हाँ, अग्रे. है. हाँ, त्रया हाँ, है. त्रया नृपा सन्ति. हाँ, वो राजा है. हाँ, वो राजा है. तीन. चत्वारः त्रयः मतलब त्रया
हाँ, तीन राजा राजा हैं, है। देर आर 3 राजास। हाँ। हाँ, चत्वार। है। हाँ चत्वार ग्राम, 4 गांव है। हाँ, सम्यक् सम्यक्। ग्रामः। हाँ, धन्यवादः। हाँ, सम्यक्। द्वौ बालकौ स्तः, 2 आर देयर, 2 बालक हैं वैसे। अवंतिका जी कृपया पठतु पंचपुष्पाणि षट्फलानि इति। पंचपुष्पाणि, हाँ 5 फूल, 6 फलानि, हाँ। 6 फल, हाँ 7 पुस्तकानि, 7 पुस्तके, हाँ 8 बाला, हाँ हाँ 8 बालक, हाँ ते 9 क्रीडा कुरु, सॉरी, हाँ पठतु कृपया पठतु। ते 9 क्रीडा कुर्वन्ति, हाँ ते 9 हाँ खेल रहे हैं, सम्यक। कर रहे हैं। हाँ, बहुत सम्यक। खेल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, खेल रहे हैं। और फिर आगे क्रीडा कुर्वन्ति मतलब दे आर मेकिंग गेम। खेल कर रहे हैं या खेल रहे हैं, दोनों सम्यक अस्ति। हाँ, अग्रे तत्र दश एव। तत्र दश एव नरा हाँ सन्ति। हाँ तत्र वहाँ हाँ 10 और नरा मनुष्य, हाँ वहाँ 10 और मनुष्य है। एवं मतलब और, एव एवं ही, केवल ही 10 ही है मनुष्य, 10 ही मनुष्य हैं ऐसे। दश एव मनुष्याः सन्ति, नराः सन्ति, 10 ही मनुष्य हैं। हाँ, अग्रे वयं वयं क्रीडां च कुर्मः। हाँ हम सॉरी वयं कथा क्रीडां च कुर्मः। हम लोग हाँ कथा हाँ और क्रीड़ा हाँ कर रहे हैं। सम्यक, बहुत सम्यक। हाँ, धन्यवादः। हाँ, सुंदर जी अग्रे पठतु कृपया। वह 10 पुस्तकें चुराता है। क्या लिखा है संस्कृते? संस्कृत भाषायां किमस्ति? स 10 पुस्तकानि चोरयति। पुस्तकानि अस्ति वा? हाँ। अस्तु तर्हि हाँ, 10 पुस्तकानि चोरयति, 10 पुस्तक चोर है। हाँ हाँ वह ईश्वरं चिंतयति, सो वह ईश्वर का स्मरण करता है, वह ईश्वर का सोचता है। ठीक है। हाँ या अत्र पुस्तकं फलं च स्तः। हाँ यहाँ पुस्तक और फलन है। हाँ, बहु सम्यक्, बहु सरल अस्ति। बहु सुलभः अस्ति, सर्वे सुलभाः सन्ति। अस्तु, ईश्वर एक ही है। हाँ, सुंदर जी भवान् एव वदतु, ईश्वर एक ही है संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषायां। हाँ, ईश्वरम् एकः अस्ति। एकः अस्ति। ख के प्रथमः करोतु कृपया। वह है, वह है तो सः अस्ति। सम्यक्, अथवा सा अस्ति अस्तु। हाँ, वह सः अस्ति अस्तु। हाँ, अंतिम 20। हाँ तुम कैसे पढ़ते देखो? हाँ, 26 वन, whichever is the last one. 26 नहीं, ग के अंतिम, not 16, 20 ग के। हाँ, तुम सब। तुम सब। हाँ, यूयम यूयम। हाँ, यूयम कथाम कथाम। ही यूयम कथाम ही। यूयम कथाम एव। हाँ, यूयम कथाम एव वदत। सम्यक्, वदथ। हाँ हाँ, परन्तु ते चिन्तयति अपि सन्ति। परन्तु ते चिन्तयन्ति। नहीं, ते हाँ ते वो सोचते भी हैं। हाँ, तो चिन्तयन्ति अपि चिन्तयन्ति अपि। सम्यक्, बहु सम्यक्, सुन्दर जी। हाँ, अवंतिका जी कृपया वदतु, संस्कृत बनाओ, संस्कृत भाषायां क इति द्वितीय। दो बालक हाँ बोलते हैं। हाँ, दो बालकौ बालकौ और बालकौ। दो बालकौ पुष्पं जिघ्रतः।
जिग्रतः सम्यक् बहु सम्यक् हा अस्तु भवती एव त्रयोदश 3 आदमी खाना खाते हैं त्रय मानवः अच्छा खाना खाते हैं भोजनं हाँ खादन्ति सम्यक् हाँ भोजनं खादन्ति परन्तु मनुष्याः नराः इति शब्दानि उत्तम अस्ति हाँ अस्तु त्रयोदश नंबर 13 ख इति वर्गे तृतीय त्रयोदश 13 भवती एव हाँ मैं इस प्रकार खाता हूँ वो वाला मैं इस प्रकार खाता हूँ अहम एवं प्रकार खादामि इस प्रकार मतलब ऐसे खाता हूँ ऐसे ओके इत्थम इत्थम सम्यक् अहम इत्थम हाँ प्रकारं खादामि इत्थम खादामि वैसे ऐसे खाता हूँ तो इत्थम खादामि हाँ बहु सम्यक् अस्ति हाँ अस्तु भवती एव अवन्तिका जी भवती एव 19 अंतिम हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं हम खेल हम वयं क्रीडा भोजनं च कुर्वन्ति ते कुर्वन्ति सॉरी ते कुर्वन्ति हम वन मोर टाइम हाँ वयं क्रीडां भोजनम् अपि कुर्वन्ति इति ते कुर्वन्ति वयं हम लोग करोमि इट्स अ प्लूरल हम वयम् इति उत्तमपुरुष बहुवचन अस्ति कुर्वन्ति इति प्रथमपुरुष बहुवचन अस्ति नास्ति वा सॉरी आई डिडंट हाँ आपको ना सी लाइक उत्तम पुरुष हाँ वयं कुर्मः सम्यक् बहु सम्यक् हाँ वयं ते कुर्वन्ति वयं कुर्मः सम्यक् अस्तु संध्या जी कृपया वदतु 3, 4 and all are easy I think 4, 5 हाँ अष्टम वदतु कृपया अष्टम यहाँ 8 लताएं हैं अत्र अष्ट लता है लता क्या लता एकवचन अस्ति बहुवचन थोड़ा डिफिकल्ट है लताः लताः है ना अत्र हाँ अत्र अष्ट लताएं है हाँ अष्ट लताएं हैं इस हिंदी इन संस्कृत ओके अष्ट लताः सन्ति सॉरी सन्ति सम्यक् बहु सम्यक् हाँ अस्तु अग्रे भवती वदतु 14 14 हाँ वह क्या सोचता है that one जैसी कथा नहीं वह क्या सोचता है वह क्या सोचता है त्वं किं विचारसन्ति ओके गुड ट्राई व्हाई त्वं वह इज त्वं इज तुम वह इज सः वो मतलब ही ना सः किं हाँ सः किं विचारं करोति यू कैन से और यू कैन से चिन्तयति सः किं चिन्तयति सः चिन्तयति इज बेटर चिंतन करना हाँ अस्तु भवती एव
एकः अपि करोतु। 17 वे ऐसे सोचते हैं। 17th हाँ। ओके वे सः तौ सम्यक् सः वे तौ अत्र चिन्तयति वे विल बी हाँ वे विल बी बहुवचन। सः सः इज एकवचन, वे इज बहुवचन, तो वे विल बी ते ते तौ ते 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 ऐसे विल बी यू ओनली रेड ऐसे या पेज अत्र ना पेज 8 सेकेंड लाइन ऐसे सी पेज 8 सेकेंड लाइन इत्थम इत्थम हाँ ते इत्थम इत्थम हाँ अग्रे वह ऐसे सोचते हैं ते इत्थम चिन्तयति चिन्तयति सम्यक् सम्यक् धन्यवादः अस्तु अहं पठामि अधुना अशुद्धवाक्य टु शुद्धवाक्य किमस्ति द्वौ बालकाः नास्ति द्वौ बालकौ अथवा त्रीणि बालकाः त्रयः बालकाः चत्वारः बालकाः पञ्च बालकाः अस्ति इतिवत् चत्वारः नरः नै चत्वारः नराः एकः नरः चत्वारः नराः अष्टलताः अस्ति अष्टलताः सन्ति एकलता स अस्ति अष्टलताः सन्ति 10 पुस्तकमस्ति नै 10 पुस्तकानि सन्ति एकपुस्तकमस्ति च भोजनमपि किं भोजनं च अपि नाट् च भोजनमपि यू हैव टू से च एट द एंड ऑफ एनीथिंग नॉट बिफोर च कम्स अंतिम अस्तु शुद्ध करो अवंतिका जी कृपया वदतु प्रथमः ईश्वरः सन्ति किमस्ति ईश्वर सन्ति ईश्वर शुद्ध करना देयर इज एन अशुद्धि इन दिस हाँ ईश्वर सन्ति अशुद्ध ईश्वर सन्ति नहीं अशुद्ध ईश्वरः अस्ति सम्यक् अथवा सन्ति ईश्वरमस्ति सन्ति हाँ ईश्वराः सन्ति सम्यक् अस्तु भवती एव वयमस्मि क्या प्राब्लम् किम् अशुद्धि वयम् अस्मि हाँ अशुद्ध अस्ति ना अहम् अस्मि अहम् अस्मि सम्यक् वयम् अगर रखना है तो वयं स्तः सॉरी वयं सन्ति वयं स्मः स्मः हाँ अस् धातु लट् लकार में अस्मि स्वः स्मः अस्तु बहु सम्यक् हाँ अस्तु भवती एव अहं स्मः नास्ति त्वं स्थ अशुद्ध किं भवति I haven't found that. I have to listen you carefully because there is outside voice is noise. No worries. Could you read again because I couldn't find out here. ओके शुद्ध करो तथा नियम बताओ इसमें ईश्वरः सन्ति इज फर्स्ट देन वयम् अस्मि अहं स्मः फिर चतुर्थः त्वं स्थ दे हैव रिटन व्हाट इज त्वं स्थ इज अशुद्ध शुद्धः किं भवति त्वं अस्ति सम्यक् असि अगर स्थ रखना है फिर यूयं सम्यक् स्तः सम्यक् बहु सॉरी स्थ सम्यक् यूयं स्थ युवां स्तः यूयं स्थ बहु सम्यक् अस्तु संध्या जी धन्यवादः अवन्तिका जी संध्या जी त्वं करोति किं भवति त्वं करोषि सम्यक् अथवा अगर करोति रखना है तो करोति रखना है तो सः करोति सम्यक् बहु सम्यक् हाँ अस्तु सः स कुर्वन्ति इति अहं कुर्मः किम् अशुद्धः अस्ति अहं कुर्मः यूयं कुर्मः
नो यूयम सॉरी यूयम कुरुथ अहम हाँ अहम अहम करोमि सम्यक अगर कर्म रखना है तो यूयम नहीं यूयम नहीं यूयम इज फॉर त्वम ना यूयम ओनली राइट त्वम युवाम यूयम सो यूयम विल बी कुरुथ अहम आवाम वयम वयम कुर्मः है ना कुर्मः इज उत्तम पुरुष बहुवचन राइट वयम कुर्मः हाँ भवती एव संध्या जी वयम करोमि किम अशुद्ध अस्ति वयं करोषि वयम वयं करुतः वयम no not kuruta aham is what you said correctly aham kurmah is wrong aham what aham अहं करोषि karomi tvam karoshi अहं करोषि tvam karoshi aham karomi ओके see that uttama purusha aham will be karomi right aham asmi aham brahman asmi वैसे aham karomi हाँ. अहं युवां युवां aham सॉरी त्वं युवा यूयं हाँ अहं हाँ aham आवाम आवां ओके अहम आवाम वयम तो वयम कुर्मः ओके वयं कुर्मः अस्तु भवती एव संध्या जी एकः अस्ति एकः अपि भवती एव रामः च कृष्णः पठति क्या शुद्ध अस्ति रामः च कृष्ण पठति देयर इज वन मिस्टेक टू मिस्टेक्स राम कृष्ण च पठति हाँ रामकृष्ण च पठतः पठति पठतः पठतः। द्वौ द्विवचन अस्ति न हाँ परन्तु सम्यक् रामः कृष्ण च नाट् रामः च कृष्ण रामः कृष्ण च करेक्ट अस्तु सुंदर जी वदतु कृपया पुष्पं च फलं पुष्पं फलं च हाँ दिस सो ईजी स करोषि स करोति अथवा त्वं करोषि हाँ अग्रे आवाम आवां कुर्वः आवाम कुर्वः आवां कुर्वः हाँ यूयं कुरुतः so therefore तौ कुरुतः तौ कुरुतः सम्यक् हाँ देन् यूयं कुरुतः यूयं कुरुतः that's correct or not? नो No, यूयं not correct यूयं कुरुतः is given right no, यूयं कुरुतः where in your PDF यूयं कुरुतः अच्छा they have written it correctly there here it is यूयं कुरुतः correct so यूयं कुरुतः is यूयं कुरुतः and युवां कुरुतः misprint is there in PDF अच्छा अवतिका जी संध्या जी what is the last one अंतिम किं भवति शुद्ध करो तथा नियम बताओ इसमें अंतिम क्या है यूयं कुरुतः यूयं करुतः कुरुतः कुरुतः नहीं ना कुरुतः लिखा है नहीं कुरुतः so that is shuddha यूयं कुरुतः is the correct sentence they have made a mistake they have written the correct sentence and they should have written the wrong sentence so it is यूयं कुरुतः they should have written यूयं कुरुतः is correct No, there is a visarga. हाँ So yuvam kurutha will come. Ah. Yuyam kurutha. but visarga is there So, yeah, in my book, visarga is there. you have PDF or book Book. even I have book In PDF visarga it's is not there there. exactly in our wing I have book it is there visarga is there but in that PDF it is not there so in PDF if you want you can just put visarga if you want but anyway यूयं कुरुतः what is given in the PDF is correct not wrong correct अस्तु अभ्यास 1 से 10 तक गिनती के 10 वाक्य बनाओ ये बहुत इजी है दो ख को बहुवचन बनाओ अस्तु अवंतिका जी ख को प्रथमः वह है बहुवचन में किम अस्ति Tau. हाँ वह तौ स्तौस्तः सम्यक तौस्तः अस्तु ग को एकवचन बदलना है वो अष्टादश करोतु कृपया हम कथा कहते हैं एकवचन में
वयम् एकवचन एकवचनं अहं कथां वदामि अहं कथां वदामि बहु सम्यक् हाँ बहु सम्यक् अस्तु संध्या जी ख का एक ख का प्रथम द्वितीय तुम कैसे हो क्या बहुवचन में बोलना है तुम कैसे हो Once again I'm trying. तुम कैसे हो? बहुवचन. तुम कैसे हो युवां. बहुवचन यूयं. यूयं सम्यक् यूयं. ऐसे. कैसे मीन्स किम. किम. हाँ ठीक है यूयं किम अस्ति. हाँ ओके नो आसी सॉरी स्था Sorry. स्था यूयं किम स्तः. स्था हाँ यूयं कथं स्था दिस इज बेटर किम स्था is okay in colloquial like that but katham stha is the shuddha यूयं कथं स्था ओके अस्तु संध्या जी भवती एव ग प्रथमा वे ऐसे सोचते हैं बहुवचन में अच्छा एक वचन में सॉरी एक वचन वे ऐसे ये क्या सप्तादश वे ऐसे सोचते हैं. We have to change it to बहुवचन. Right? एक वचन एकवचन. अहम् अत्र चिन्ता अस्मि. एक सेकेंड वे इज ते सो एक वचन में भी सह अथवा सह सा वैसे सह हाँ ऐसे इत्थम अत्र इह अरबोत यहाँ हियर सो ऐसे भी इत्थम देन सोचते हैं चिंता यू सेट करेक्टली हाँ यू सेट करेक्टली चिंतयति सह इत्थम चिंतयति अस्तु सुंदर जी भवान् त्रयोदश मैं इस प्रकार खाता हूँ बहुवचन वयम पायल वयम इस प्रकार होगा ऐसे सो वयम इत्थम 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 खादामः वयम खादामः इत्थम खादामः एकोनविंशति 21 नहीं 90 एकविंशति इज 21 एकोनविंशति 90 तो हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं हाँ तो अहम हाँ अहम क्रीडम क्रीडां क्रीडाम हाँ अहम क्रीडां क्रीडां भोजनम च हाँ करोमि 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 हाँ अहम करोमि अपि also you can say here भी, भी yeah. you can अपि हाँ अस्तु भवान् एव सुन्दर जी वाक्य बनाना है त्रयः इति शब्दः त्रयः अत्र त्रयः पुस्तकानि सन्ति सम्यक् सन्ति अस्ति सन्ति भी है इसमें त्रयः सन्ति दोनों यूज से एंड लट लकार अहम अत्र डैश अहम अत्र अस्मि एंड लास्ट वन यूयं किम यूयं किं यूयं किं कुरुत कुरुतः सम्यक् अस्तु अवंतिका जी कृपया वदतु भवती ये वाक्य बनाओ चत्वारः इति शब्देन सह चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति. हाँ सम्यक् चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति अस्तु करोति इति शब्दः करोति इति शब्देन सह अहं त्रयः चपाति करोमि. करोति करोति सः त्रयः चपाति करोति. हाँ ठीक चपाती विल बी चपातयः शायद चपाती चपातयः रोटी हाँ रोटिकानि that is better word रोटिका is एकवचन रोटिकानि अस्तु सम्यक् हाँ भवती एव ते तत्र डैश
ते तत्र सन्ति ते तत्र सन्ति बहु सम्यक् अस्तु षष्ठ त्वं तत्र किं दाश् त्वं तत्र किं त्वं त्वं करोषि हाँ त्वं करोषि सम्यक् संध्या जी किं करोमि हाँ करोमि इति शब्देन सह वाक्यगमयि दश बालकः भोजनं करोमि दश बालकाः भोजनं कुर्वन्ति करोमि इस् फॉर I you are confusing the row and column हाँ ओके अहं भोजनं करोमि सम्यक् अहं भोजनं करोमि दश बालकाः भोजनं किं कुर्मः वयं दश बालकाः कुर्वन्ति सम्यक् दश बालकाः कुर्वन्ति वयं सर्वे कुर्मः अस्तु भवती एव तृतीया यूयम् इह अस् धातु difficult what you can do यूयम् इह सी अस् धातु अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः why tishta leave tishta stha will be tishta this is only stha yuyam yuyam iha stha astu aham bhojanam your favorite is come aham bhojanam karomi this we tell correctly okay but no everything is good samyak asti so we are saying correctly little practice you will be very good with this the only confusions are that same thing for all of us it will be difficult in the beginning it is like that prathama purusha bahuvachana and that uttama purusha ekavachana we confuse this way that way so it is okay little practice it will get better not a problem considering 1.5 months ago we are much better now okay so next Monday we will meet in the weekend I will share Maheshwara Sutrani कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अस्तु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 ॐ